Next, question number 21 is, a man standing on the deck of a ship. A man standing on the deck of a ship which is 10 meters above the water level, which is 10 meters above the water level, observes the angle of elevation, of the top of a hill, as 60 degrees, and the angle of depression of the base of the hill, as 30 degrees. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. This is our question. So the question is, a man standing on the deck of a ship which is 10 meters above the water level. ये water level है. This is water level. Let us assume ये is the deck of the ship. B is the bottom of the ship. ये पूरा एक ship है, उसका deck है जो इस water level से 10 meters ऊपर में है. It means this is 10 meters. This is 10 meters. ये is the deck of a ship which is 10 meters above the water level. Observes the angle of elevation of the top of a hill. Hill यहाँ है. This is the hill. CD is the hill. यहाँ से उस हिल का टॉप को देखा है, हिल का टॉप को, and the angle of elevation is 60 degrees. So this angle is 60 degrees. 60 degrees. And the angle of depression of the base of the hill is 30 degrees. यहाँ से फिर इस हिल का बेस को देखा है, बेस या फुट, and this angle of depression is 30 degrees.
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा, लेट अस एज्यूम दिस इज मीटिंग द CD at point E. तो मुझे इस शिप का और इस हिल का दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इस हिल का हाइट कैलकुलेट करना है. सो द सॉल्यूशन इज, let A is the deck of, this is the deck of the ship. Let A is the deck of a ship which is 10 meters above water level. Above water level. Let A is the deck of a ship which is 10 meters above the water level. CD is the hill. CD is the hill of height h. Of height h. So this is h. Isn't it? So this is CD. Let CD is the hill of height h and x is the distance. X is the distance between the ship and the hill. And the hill. This is 10 meters. ये ship है, वो hill है. दोनों के बीच में जो distance है, let it be x. x. ये अगर x होगा तो ये भी x होगा. ये 10 है तो ये भी 10 होगा. 10 meters. ये अगर 10 होगा तो ये भी 10 होगा. ये पूरा h है, ये पूरा h है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? h minus 10. So this distance would be h minus 10. ये एंगल अगर 30 डिग्री से, if this angle is 30, then this angle is also 30. If this is 30, then this is also 30. Alternate interior angles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करो, इन ट्रायंगल ए बी डी लो. इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला, दिस इज ये, दिस इज बी, दिस इज डी. इन ट्रायंगल ए बी डी 30 है ये, 30 का ऑपोजिट, 30 का एडजेसेंट. 30 का ऑपोजिट, 30 का एडजेसेंट. ऑपोजिट और एडजेसेंट को कनेक्ट करने वाला tan है. सो tan ऑफ दैट एंगल, so tan of that angle is equals to, tan of this angle is equals to opposite by adjacent, which is 10 by x. tan 30 का वैल्यू 1 by root 3 है. 1 by root 3 is equals to 10 by x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूंगा, x is equals to 10 root 3 meters. So x is equals to 10 into 1.732. So x is equals to 10 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ, 17.32 meters. This is the distance between the ship and the hill. X is the distance between the ship and the hill. Ship ये है, वो hill है, दोनों के बीच में distance कितना है? 17.32 meters है. Now in triangle ACE, in triangle ACE, this is A, this is C,
दिस इज ई. इन ट्रायंगल ए सी ई, इसमें इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे इन ट्रायंगल, ये 60 है, 60 का ऑपोजिट h माइनस 10, 60 का ऑपोजिट h माइनस 10, 60 का एडजेसेंट x है. सो ऑपोजिट और एडजेसेंट को कनेक्ट करने वाला tan है. सो tan 60 degrees is equals to, tan of this angle is equals to opposite by adjacent. कितना होगा? h minus 10 by x. Tan of this angle equals to opposite by, this is opposite and this is adjacent. Tan 60 का वैल्यू होता है √3. So √3 is equals to h minus 10 by x. This is h minus 10 by x. √3 मतलब √3 by 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. √3x is equals to, √3x is equals to 1 into h minus 10 is h minus 10. Is equation number 2. मुझे ऑलरेडी x का वैल्यू आ चुका है, ये है वो x का वैल्यू यहाँ से. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो. x का वैल्यू यहाँ रख दो. आप ये वाला वैल्यू रखोगे तो थोड़ा से डिफिकल्टी होगा, लेकिन x का वैल्यू ये रखोगे क्योंकि 10√3 को ही देखो, ये वाला x का वैल्यू 10√3 बोलो या फिर 17 पॉइंट, उसी को सिंपलीफाई किया तो ये आया है ना. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके मान लो. हालांकि दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये वाला वैल्यू x का वैल्यू 10√3 अगर मैं यहाँ रख दूंगा, सिंपलीफिकेशन इजी होगा. सो देयरफॉर x का वैल्यू 10√3 अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो h आ जाएगा. सो व्हाट आई एम सेइंग, फ्रॉम equations 1 and 2, from equations 1 and 2, x value is how much? 10√3. यहाँ रख दो तो क्या होगा? This is √3 into x value is 10√3. Now put it here. That is 10√3 is equals to h minus 10. Isn't it? So that is 10 into √3 into √3. √3 into √3 कितना होगा? 3 हो जाएगा. √3 into √3 is 3. 3 into 10. √3 into √3 is 3. 3 into 10 is 30. Is equals to h minus 10. ये minus 10 को आप इधर लेके आ जाओ. So 10 plus 30 is equals to h. So h is equals to 40 meters. H means what? H means the height of the hill, and x is, this is, isn't it? Therefore the height of the hill is 40 meters, and the distance between the hill and the ship is क्या होगा? x है. ये भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी को हमने सिंप्लीफाई किया है. हाउ मच? 17.32 meters. So this is one answer, this is the second answer.